Hello students, next we will try to understand the second type of field effect transistor, that is MOSFET. Okay, in the previous sections we tried to understand the first type of field effect transistor, that was JFET, junction field effect transistor, and in that we tried to understand two types, N channel and P channel. In MOSFET stands for metal, O stands for oxide semiconductor field effect transistor. The current through this transistor also depends upon the external field which we are going to apply. Okay, and metal oxide semiconductor field effect transistor. Therefore, if the transistor which works in that way comes under the heading FET, field effect transistor. Okay, MOSFET is further classified into depletion type. I have told you about this in the first class itself for the field effect transistor. Okay, depletion type and enhancement type. Okay, so there are two types, and again further depending upon which is the majority charge carrier, this is N channel or P channel. Okay, if the current conduction is because of electrons, then it is N channel, and if it is because of holes, it will be P channel. Okay, so that is what we will try to understand. So the first thing which we will try to understand is depletion type MOSFET. Depletion type MOSFET, and in that the first one we will try to understand is N channel MOSFET. Okay, as in case of JFET, even here in MOSFET, when you want to design an N channel type of MOSFET, you have to take N type semiconductor. Okay, so the construction part will be like this. This is an N channel N type semiconductor. Okay, N type semiconductor. Of course, if N type semiconductor is there, there will be large amount of free electrons available. Okay, these two terminal, as in case of JFET, these two terminals are same. It is called as source. This terminal is called as drain. Okay, and we have to apply a polarity in such a way that current flows from source to drain, or I can say charge carrier should flow from source to drain. Okay, and if you recall in JFET, what we did is on both the sides of the semiconductor we doped, if it is N channel, we doped trivalent impurity to form 2 PN junction, right? But in case of MOSFET, what we do is only on one side we dope trivalent impurity to form a PN junction. Okay, if you recall in a JFET, the gate to source terminal should always be reverse bias. Okay, only one biasing has to be provided, so that is not required in case of N channel MOSFET. It works in both the cases, positive as well as negative. How? Let us try to understand. Okay, so as I said, this up to this point the construction is exactly similar to what we had in JFET, N channel JFET. Okay, but here for MOSFET, what we will do is on the other side, in front of the PN junction, this terminal is called as substrate. Okay, so MOSFET will have 4 terminals: source, drain, substrate, and there will be one more terminal called as gate. Okay, now to design gate, what we do is, this is the semiconductor layer. Over the semiconductor layer we deposit oxide layer. The oxide which we use is silicon dioxide, SiO2, and then there will be a metal deposition over it. Okay, so this is metal.
and one terminal will be taken out. Okay, and this terminal will be called as gate. Okay, so we have source, we have drain, we have substrate, and in front of substrate we have gate, where we have a semiconductor layer over which we have deposited oxide layer, and there is a deposition of metal. So this metal oxide semiconductor forms the name MOS, metal oxide semiconductor field effect transistor. Okay, now this metal acts as one plate of the capacitor, semiconductor acts as one plate of the capacitor, and this oxide layer, which acts as an insulator, is a dielectric, Okay, so this is metal, this is semiconductor, and this is oxide MOS, and this acts as a कैपेसिटर. एंड व्हाट कैपेसिटर डज, कैपेसिटर इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज. जो भी पोलैरिटी आप लगाओगे उस पोलैरिटी के चार्ज वो कैपेसिटर में स्टोर होना चालू करेंगे, है ना. कैपेसिटर का बेसिक काम चार्ज को स्टोर करके रखना, वो करंट को पास नहीं होने देता, है ना. तो इसलिए या तो एक टर्मिनल पूरा पॉजिटिव रहेगा, एक टर्मिनल पूरा नेगेटिव रहेगा, और अगर आप पोलैरिटी रिवर्स करते हो तो द अदर टर्मिनल कैन बी पॉजिटिव, दिस टर्मिनल कैन बी नेगेटिव. तो जो भी पोलैरिटी पे आप उसको कनेक्ट करोगे उस पोलैरिटी के चार्ज उसमें स्टोर होना चालू हो जाएंगे. ठीक है, सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ योर एन चैनल मॉसफेट. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ एन चैनल मॉसफेट. ओके, वर्किंग ऑफ एन चैनल मॉसफेट. तो आई विल ड्रॉ द सेम डायग्राम. One more thing I forgot to tell you that, as I told you, source, gate, drain and substrate are the four terminal. In case of MOSFET, substrate is always internally connected with the source. Okay, so when I draw the operational circuit, even if I don't draw this condition, substrate is connected to source directly, you have to consider that substrate is always internally connected to the source. Okay, so that is the important two condition. In case of JFET, there were two PN junction, and the two PN junctions were internally connected to each other, and the terminal was gate, but the operational circuit does not show the connection between the two PN junction. Okay, so I may not draw this connection, but for your ease, because I am saying this because some books will not refer this connection. Okay, they will just say that substrate is directly connected to the source. Okay, but for your ease, I will make sure that when I draw an operational circuit, I draw the interconnection between substrate and source. Okay, so let us try to understand the working. Okay, this is drain, this is source, this is substrate, the PN junction, substrate which is internally connected with the source. Okay, on other side, over the semiconductor layer we have an oxide layer, metal is deposited over it. So this is SiO2, this is metal, and this metal oxide semiconductor forms the capacitor, and the terminal which is taken out is called as gate. Okay, now we are trying to understand the working of N channel MOSFET. So of course we have N type semiconductor. Okay, N type semiconductor. Now when we'll try to understand the working, what we will do is we will connect, of course, as I said, the external field which is applied, between gate and source will decides the current which is flowing from source to drain. Okay, so let us initially start that when gate is say negative and source is connected to positive. Okay, and let's say that is through a switch minus plus. Of course this potential is applied between gate and source. This potential is called as VGS. Okay, now we have to apply a potential, between drain and source, in such a way that
current flows from source to drain. Current flows from source to drain. That means electrons should be repelled by the source and get attracted by the drain. So what should be the polarity? Electrons will be repelled by the negative terminal. So source should be connected to negative and drain should be connected to positive, and this potential is applied between drain and source. So this is VDS. Okay, this potential is called as VDS and VDS. Okay, and the current which will be flowing because of this potential, what will happen is electrons will be repelled by the source, move towards the drain. So the current which will flow from source to drain will be called as IDS. Okay, so let us try to understand the working. Okay, so we will try to understand the three conditions which we have, the same thing which we have applied for JFET. Okay, so the first case is VGS equals to 0. Okay, that means this switch is open. When this switch is open, it is as if no polarity is connected between gate and source. As I told you, the current will be affected by the external field applied between gate and source. और जब तक ये switch open है तो इन दोनों के बीच में कोई potential है क्या? नहीं है. मतलब ये चार्ज कैरियर जो है दे विल इजीली बी ट्रेवलिंग, उनको कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा. ऑल दिस चार्ज कैरियर विल मूव फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन. मतलब आईडीएस उस टाइम पे इट विल बी मैक्सिमम. ठीक है, आईडीएस उस टाइम पे मैक्सिमम रहेगा. ठीक है. सेकेंड केस, सपोज मैंने VGS बढ़ाना चालू किया. ठीक है, जैसे ही मैं ये स्विच ऑन करता हूं, व्हाट हैपेंस इज, ये जो मेटल है ना, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये एक कैपेसिटर फॉर्म कर रहे हैं. और कैपेसिटर का काम क्या है? टू स्टोर चार्ज. और कौन सा स्टोर करेंगे? जिस भी पोलैरिटी से वो कनेक्टेड है उस पोलैरिटी के चार्ज उसमें स्टोर होना चालू हो गए. मतलब ये कैपेसिटर, दो इट इज इंसुलेटर, वो करंट को फ्लो नहीं होने देगा, लेकिन यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्ज को डेवलप कर देगा. जैसे ही नेगेटिव चार्ज डेवलप हुए, ये नेगेटिव चार्ज क्या करोगे? ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये जो सोर्स से ड्रेन की तरफ जा रहे हैं, इनको रिपेल करेंगे. रिपेल करेंगे तो क्या होगा? इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स ड्रेन, ये जो चार्ज कैरियर है ये जाएंगे पीएन जंक्शन की तरफ. ओके, और आप ध्यान से देखो, ये जो पीएन जंक्शन है, P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव और उसका जो एन रीजन है, N इज कनेक्टेड टू नेगेटिव. मतलब ये जो पीएन जंक्शन यहाँ बना है ना, इस पोलैरिटी पे वो पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है. और फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? डिप्लीशन लेयर विथ वैनिशेस और करंट विल फ्लो. करंट अगर फ्लो होता है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स विल एंटर इनटू पी रीजन, होल्स विल एंटर इनटू एन रीजन. मतलब करंट फ्लो होगा. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स पहले ड्रेन की तरफ जा रहे थे, अब वो ये नेगेटिव टर्मिनल, ये जो कैपेसिटर है उसमें जो नेगेटिव चार्ज बना है, वो नेगेटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा. और इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स ड्रेन, ये चार्ज कैरियर कहाँ जाएंगे? पीएन जंक्शन की तरफ, जो फॉरवर्ड बायस है. और फॉरवर्ड बायस में ये इलेक्ट्रॉन्स पी रीजन में एंटर करेंगे एंड दे गेट अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ VGS. तो क्या होगा? मतलब पहले पूरे चार्ज कैरियर ड्रेन की तरफ जा रहे हैं, अब कुछ चार्ज कैरियर ड्रेन की तरफ जा रहा है, कुछ चार्ज कैरियर जो रिपेल हो रहे हैं वो पीएन जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल. सो व्हेन VGS increases, IDS decreases. Okay, IDS decreases. And if you try to understand the third case, in third case what we can see is, when VGS is maximum, तो क्या होगा? बहुत सारे नेगेटिव चार्ज यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे. VGS आप धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे तो बहुत सारे नेगेटिव चार्ज बढ़ते जाएंगे यहाँ पे, और ये नेगेटिव चार्ज जितने बढ़ेंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिपेल होंगे सोर्स से ड्रेन की तरफ जाने वाले, है ना. तो मतलब क्या होगा? अब जो चार्ज कैरियर है, all this charge carrier which were moving from source to drain now will be repelled by this negative terminal, and all these electrons will be attracted towards the PN junction which is in forward bias condition. और forward bias में होने की वजह से पूरे इलेक्ट्रॉन्स P में जाएंगे, then they will get attracted to the positive terminal of the battery. Okay, positive terminal of the battery. That means उस टाइम पे जब VGS maximum है तो IDS will be 0. ओके, करंट जो फ्लो हो रहा था सोर्स से ड्रेन में वो 0 हो जाएगा. मतलब जो एक्सटर्नल फील्ड हम लगा रहे हैं गेट और सोर्स के बीच में, दैट कंट्रोल्स
that controls the current flowing from source to drain, है ना. So external field which has been applied controls the current which is flowing through the transistor, and that type of transistor is called as field effect transistor. And because of this construction, that there is a semiconductor layer over which there is an oxide layer and there is a metal deposition, this metal oxide semiconductor forms MOSFET, metal oxide semiconductor field effect transistor. Okay, now this is when gate is connected to negative terminal. Okay, gate is connected to negative terminal. Suppose I change the polarity, see what happens. Okay, change the polarity. So what happens is, when I change the polarity, that means gate is connected to positive and source is connected to negative. This potential will remain the same because we have to repel the electrons from source and make sure that it goes towards the drain. Now what happens is, as I connect this gate terminal, to positive terminal, what type of charge will be stored in the capacitor formed by the metal oxide semiconductor? There will be positive charge which will be stored in the capacitor formed by the metal oxide semiconductor. तो आप बोलोगे कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक आएंगे और फिर ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे. लेकिन आप देख रहे हो कि ये जो ऑक्साइड लेयर है ये है एक इंसुलेटर, है ना. ऑक्साइड में से करंट फ्लो नहीं हो सकता, है ना. वो डाइलेक्ट्रिक जैसा काम कर रहा है, उसमें से तो करंट फ्लो होगा नहीं. वेरी नेग्लिजिबल करंट फ्लोस, बहुत ही नेग्लिजिबल करंट फ्लोस. लेकिन फिर बाकी चार्ज कैरियर क्या करेंगे? अब ध्यान से देखना कि ये जो चार्ज कैरियर है सोर्स से जो निकल रहे हैं, ये पहले कहां जा रहे थे? ड्रेन पे या तो पीएन जंक्शन पे. अब ये जो P है, P इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, N इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव. मतलब ये जो पीएन जंक्शन है ये तो रिवर्स बायस हो गया, और रिवर्स बायस में जंक्शन में से करंट फ्लो होता क्या? नहीं, जंक्शन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, है ना. जंक्शन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा. सो ये जो चार्ज कैरियर सोर्स से निकल रहे हैं ये पीएन जंक्शन की तरफ नहीं जा सकते, ये अट्रैक्ट हो सकते हैं गेट की तरफ, लेकिन गेट तो इंसुलेटेड है तो वो गेट से भी फ्लो नहीं हो सकते. सो द ओनली पाथ लेफ्ट इज टुवर्ड्स ड्रेन. ठीक है, तो ओनली पाथ. तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल जब होगा, पॉजिटिव से आप जब कनेक्ट करोगे तो दिस पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली एंड अप एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द ड्रेन. मतलब heavy amount of current flowing through the transistor. Okay, so if you remember, transistor can be used as an amplifier, transistor can be used as a switch. So MOSFET is a very good transistor to be used as a switch, है ना. जैसा हमने बोला कि जब नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया था, है ना, तो जब VGS मैक्सिमम है तो IDS 0 है, मतलब उसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा. तो जब नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो करंट फ्लो होता नहीं, और पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करता है ड्रेन की तरफ. हेवी अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द ट्रांजिस्टर. सो जब हेवी अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द ट्रांजिस्टर इज सेड टू बी इन saturation region. When no current is flowing through the transistor can be said to be in cutoff region. So we can control the operation of the transistor by the gate potential, है ना. तो गेट पोटेंशियल को नेगेटिव किया तो कट ऑफ में रहेगा, और गेट पोटेंशियल को पॉजिटिव किया तो सीधा सैचुरेशन में जाएगा, राइट. सो कट ऑफ सैचुरेशन ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज अ स्विच. और ये सब चीजें हमने पेपर 2 में पढ़ी थी सेमिस्टर के लॉजिक फैमिलीज के चैप्टर में. आई जस्ट गिव यू अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू मॉसफेट, बट यहाँ पर हमने डिटेल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है. सो दिस इज वर्किंग ऑफ N channel MOSFET. On the same lines we will try to understand construction and working of P channel MOSFET. I hope you have understood.